Hello friends, welcome to ProTalent and this is our session 6 for legal maxims. Legal maxim का ये हमारा छठा session है and we'll be in a position to give you total 8 sessions. So there are 2 more yet to go. तो आपको इससे पूरा एक तैयारी का support मिल जाएगा. Okay, let me start with, you can say, this 10 maxim for the day. We have a ratio decidendi. It says ratio decidendi. It is a principle or a reason which underlies a court judgment. कोई कोर्ट का जो जजमेंट है वो किस प्रिंसिपल की बिना के ऊपर आया है उसको हम बोलते हैं रेशियो डेसिडेंडी. इट इज अ रैशनल फॉर डिसीजन. आपने कोई पर्टिकुलर चीज का डिसीजन लिया है, किस बेसिस पे लिया है. दैट इज व्हाट बेसिकली द मीनिंग ऑफ रेशियो डेसिडेंडी. इट इज अ पॉइंट इन अ केस that determines a judgment or the principle that the case establishes. That is called ratio decidendi. In other words, in the legal term, ratio decidendi is a legal rule which is derived from or which is inconsistent with various, you can say, legal reasoning based on certain judgments or based on certain outcome and on which the judgment or outcome depends. This is what the meaning of ratio decidendi. There is one more word which have the similar idea but there is a difference. The similar idea is called obiter dicta. ठीक है. So the ratio decidendi और obiter dicta में फर्क है कि obiter dicta is a general rule which is binding on courts of lower and later jurisdiction to the doctrine of stare decisis. ठीक है. Which means उसका ये मतलब हो गया कि जो हायर कोर्ट है ना, जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के ऊपर रूल कर सकती है. दैट इज कॉल्ड ऑबिटर डिक्टा. ओके, ठीक है. सो सर्टेन कोर्ट्स आर एबल टू ओवररूल डिसीजंस ऑफ लोअर कोर्ट. ओके, दिस इज व्हाट बेसिकली ऑबिटर डिक्टा. व्हाइल रेशियो डेसिडेंडी इज अ प्रिंसिपल और रीजन अंडरलाइंग द जजमेंट. है ना. अगला पॉइंट है रेस इप्सा लोक्यूटर. बहुत बार आपने सुना होगा. It says the thing speaks for itself. जैसा आपको दिख रहा है उसी के ऊपर हम ये आउटपुट लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा. So in the common law of tort, पुराने जमाने में res ipsa loquitur, that means thing speaks for itself का बेसिक मकसद ये होता था कि भाई कोई भी negligence है which is derived out of an accident or injury in the absence of any direct evidence. ठीक है ना. कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो भी है ना उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रोटेक्शन मिलता था, इम्यूनिटी मिलती थी. आज इन अ मॉडर्न फॉर्मुलेशन इट इज डिफरिंग. ठीक है, वो बिल्कुल बदल गया है. इस बदलाव के अंदर बोला गया है दैट दिस कॉमन लॉ ये बोलता है दैट एक्सीडेंट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स. ड्यूटी होना चाहिए, उस ड्यूटी का ब्रीच होना चाहिए, उसके ऊपर कॉजेशन एंड इंजरी, ये 4 चीजें होनी चाहिए तो जाके कुछ चीजें बनेगी. ओके, तो ये नेग्लिजेंस प्रूव करना जरूरी है इसके द्वारा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट है रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकारे. दैट मींस द किंग कैन डू नो रॉन्ग. इट इज अ काइंड ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी और अ क्राउन इम्यूनिटी. सो दैट मींस इट इज अ प्रिंसिपल इन द इंटरनेशनल लॉ दैट exempts a sovereign state from a jurisdiction of any foreign national court. Okay, so India as a sovereign state cannot be prosecuted in a court of Pakistan. That is a very simple principle. It says rex non potest pecare, king can do no wrong. It is giving immunity to the sovereign state. Remember, in India we have this sovereign immunity for our country against other nations, but at the same time in India we have given some kind of immunity to some people. So primarily we have given to President of India, governors of state. ठीक है भाई, as long as they are holding the office at that time they cannot be prosecuted but they can be impeached. उनको impeach किया जा सकता है. तो हमारे यहाँ पे ठीक है ये एक तरीके से immunity है. This is not sovereign immunity, it is simply
an immunity. Okay, ठीक है, it is simply an immunity. Sovereign immunity is based on the concept of sovereignty, in the sense that a sovereign may not be subjected without its approval to the jurisdiction of another sovereign. ठीक है, एक sovereign state cannot be coming under some other sovereign state. So I hope this is very clear. Okay, next point is salus populi suprema lex. It says welfare of the people is the supreme law. ठीक है, populi is people. ठीक है, अलग अलग तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दिया है. ठीक है, the health of people should be the supreme law. ठीक है, let the good of the people be the supreme law. So whatever laws are being made, the principle of salus populi is to be applied, that welfare of the people would be supreme. कोई भी लॉ बनाना है वो उसके नीचे होगा. The welfare of people shall be the supreme law, and sometimes it has appeared on the coats of arms of various state or possibly cities. Cities के जो emblem होते हैं, coats of arms होते हैं, वहां पे ये लिखा होता है that the salus populi has suprema lex, which means welfare of the people is the supreme law. So हम बस उन्हीं के लिए काम करते हैं, ऐसा समझ में आता है. Next point is called status quo, the state of things as they are now. ठीक है, which means status quo, which is a Latin phrase. It means जो भी existing state of affair है उसको वैसा ही रहने दीजिए, उसको चेंज नहीं करिए. बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था we will maintain status quo till the final outcome comes. तो status quo का मतलब हो जाएगा जैसा है अभी वैसा ही, है ना. जब तक फाइनल आउटकम नहीं आता है तब तक बाबरी मस्जिद जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में रहेगी. ठीक है, अब उसके अलग अलग मतलब होते हैं. सोशियोलॉजिकली अलग मतलब हो सकता है, पॉलिटिकली अलग मतलब हो सकता है, उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है. लीगल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो स्टेटस को मेंटेन करना मतलब जैसी सिचुएशन अभी चल रही है वैसे ही करनी पड़े. फॉर एग्जाम्पल, जब NJAC, ठीक है, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया, then Supreme Court said the earlier system will remain, so we will maintain status quo with respect to a previous, we can say, situation until we get a newer method which is acceptable to everyone. Okay, so तब तक पुरानी method which is called collegium system चलेगी. This is what they mention. Okay, that is called status quo, state of things as they are now. जैसा है अभी स्टेटस को वैसा ही आप मेंटेन करिए. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड साइनेडाई, वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, साइनेडाई इज अ वेरी नॉर्मल टर्म. कभी मीटिंग के अंदर बातें हो जाती है दैट वी विल एडजर्न दिस मीटिंग, साइनेडाई, व्हिच मींस indefinitely we will adjourn, we will stop this meeting without any day. So we have not assigned next meeting कब होगी, अगली मीटिंग कब होगी वो बताया नहीं है, उसकी डेट फाइनल हुई नहीं है, and thereby this meeting is adjourned. That is without means, without assigning a day for a further meeting or hearing. That is to adjourn an assembly. Sine die is to adjourn it for an indefinite period. So this comes with an understanding of, we can say, normal application. हम जब डे टू डे लाइफ में जब बात करते हैं वहां तो ऐसा बोलते नहीं है, पर कभी कोर्ट में बोला कि भाई दी कोर्ट इज एडजर्न साइन डाई, और दिस मैटर इज एडजर्न फॉर साइन डाई, और पार्लियामेंट इज एडजर्न फॉर साइन डाई. इस तरीके से इसमें बात होती है. ओके, आगे बढ़ते हैं. वी हैव उबी जस इबी रिमीडियम. वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. Ubi jus ibi remedium. It is a basic principle which is contemplated in this maxim, is that when a person's right is violated, the victim will have definitely equitable remedy. जितना आपको नुकसान हुआ है उतना ही आपको भरपाई होगा. The maxim also states that the person whose right is being infringed has a right to enforce the infringed right through any action बिफोर अ कोर्ट. सभी कोर्ट ये चीज से गाइडेड होती है कि जहां कहीं अधिकार है वहां उसका रेमेडी है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड उबी जस इबी रिमेडियम. वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, व्हिच मींस सामने वाले पर्सन को इक्विटेबल रेमेडी मिलनी जरूरी है. ओके,
नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड विश मेजर. विश मेजर इज कॉल्ड एक्ट ऑफ गॉड, है ना. इट इज इंक्लूडिंग हरिकेन, टॉर्नेडो, फ्लड, अर्थक्वेक. ठीक है, इट इज कॉल्ड एक्ट ऑफ गॉड और फोर्स मेजर, ऐसा भी आप बोल सकते हो, और विश मेजर. ठीक है, इट इज सम इरेजिस्टिबल नेचुरल अकरेंसेस, कोई ऐसे नेचुरल अकरेंसेस जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, एंड दैट कैन कॉज डैमेज और डिसरप्शन. ठीक है, एंड नीदर इट इज कॉज बाय और नॉट इट इज प्रिवेंटेबल बाय ह्यूमंस, देन इट इज कॉल्ड विश मेजर. और ये जनरली कॉन्ट्रैक्ट में यूज होता है, दैट विश मेजर की वजह से हम ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, so these terms are commonly used in the contracts to exclude one or both parties from liability, or they cannot fulfill their obligation because of this measure. Okay, so that is how it is generally used in the contractual obligation. आगे बढ़ते हैं and we talk about next point is called voluntary non-fit injuria. ठीक है, बहुत सारा सामान यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने जानबूझ के यहाँ पे डाला है ताकि आप उसको बाद में पढ़ सको. ठीक है, आप ये बिल्कुल पीपीटी डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा. आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द रेस्ट ऑफ द थिंग, बट आई विल एक्सप्लेन द मेन पॉइंट. इट इज कॉल्ड वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया. इट इज कॉल्ड डैमेज सफर्ड बाय कंसेंट गिव्स नो कॉज ऑफ एक्शन. ठीक है, विच मीन्स अगर आपने सामने से, है ना, कोई वॉलंटरली कोई रिस्क लिया है और उसकी वजह से अगर आपको कोई डैमेज हुआ तो उसकी वजह से सामने वाले का कोई फॉल्ट नहीं है. ठीक है, अब आप किसी के घर के नीचे खड़े हैं और वहां ऊपर गमला रखा है और आप उसी गमले के साथ छेड़खानी करते हैं और वो गमला आपके सर पे गिरा, आपकी वजह से गमला आपके सर पे गिरा, तो जो गमले का ओनर है वो आपकी गलती का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. आई होप दैट इज वेरी क्लियर. सो दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया. अ विलिंग पर्सन, है ना, इफ यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट सर्टेन रिस्क, ठीक है, that injury is not acceptable. Okay, so this is a common law doctrine. It states that if someone willingly places themselves in a position where harm might result, knowing that some degree of harm might result, they are not able to bring any claim against the other party. Okay, this is possibly in the tort में वो नहीं कर पाएंगे. This is very simple, है ना. ठीक है, पर अब गेम यही हो जाता है कि किस चीज को वॉलंटरीली एग्रीड रिस्क माना जाएगा. अगर फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट की मैच देखने गया हूं और वहां से क्रिस गेल ने एक मजेदार सा सिक्स मारा और वो बॉल आकर स्टेडियम में आने वाली है और उसमें मैं स्टेडियम में बैठा हूं और मेरे सर पे बॉल लगती है, तो मैंने वॉलंटरीली वो रिस्क लिया था क्योंकि वो मैं मैच देखने गया था. ठीक है, अब यही चीज अगर मैं कार की रेस देखने जाऊं और अचानक से कार में एक्सीडेंट हो जाए और कार उछलकर सीधी स्टेडियम के अंदर आ जाए, तो मैंने उस चीज का रिस्क नहीं लिया था. ये ध्यान रहे, there is a difference in the car accidents and there is you can say the six on the cricket ground. There is a difference. Okay, so मैंने वो बॉल जो स्टेडियम में आएगी उसका मुझे नॉलेज था और उसके बावजूद मैं मैच देखने गया, which means I voluntarily taken that risk. ठीक है, अच्छा, मुझे पता भी था जब मैं कार की मैच देखने गया कि कार का एक्सीडेंट होता है, पर कार का एक्सीडेंट होने से मैंने ये कंसेंट नहीं दिया था कि वो कार उछलकर स्टेडियम में आएगी और मैं उसकी वजह से तो मुझे परेशानी हो, तो भैया उसका मैंने कंसेंट नहीं दिया था. आई होप दैट इज वेरी क्लियर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. वीटो, व्हाट इज वीटो? वीटो इज अ बैन और ऑर्डर नॉट टू अलाउ समथिंग टू बिकम अ लॉ or even if it has been passed by the parliament. अगर वो पार्लियामेंट के द्वारा पास भी हो गया है तो भी हम उसको रोक सकते हैं. लैटिन में वीटो बोलता है आई फोरबिड, मैं इसको रोक के रखता हूं, एंड दैट इज अ पावर. ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट साहब के भी पास ऐसे पावर है, विच इज नॉट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पावर, बट उनके पास भी अलग अलग तरीके के वीटो है जिसके द्वारा वो रोक सकते हैं. आपने वीटो पावर सुना होगा. यूनाइटेड नेशन में कौन से कंट्रीज के पास होता है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए. उनके पास, है ना, उनके पास ये वीटो का पावर है. ठीक है, दे कैन ब्लॉक एनी रिजोल्यूशन और इट कैन बी लिमिटेड. ठीक है, दे कैन स्टॉप इट. ठीक है, उसको रोक सकते हैं कि भैया ये नहीं कर सकते. ध्यान रहे, वीटो may give power only to stop, you can say, changes. ठीक है, and thereby it may be protected as a status quo. So in USA there is a proper veto available.
with the president वो पूरा रोक सकते हैं, while in Indian president purpose, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, he may propose certain amendments or he may return that bill to the parliament for reconsideration. In USA, president can simply stop it. In India, he cannot stop it, but he can resend it for reconsideration. So that is the difference. ठीक है, ये वीटो का डिफरेंस होता है. अलग अलग जगह पे अलग अलग वीटो होते हैं और वीटो का पावर अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, एंड दिस इज आवर लास्ट पॉइंट फॉर टुडेज डिस्कशन कॉल्ड वाइस वर्सा एंड वेवर. ठीक है, वाइस वर्सा is a reverse position and waiver is voluntarily giving up or removing certain condition. So for example, let's say there is a fee waiver from a college. So college ने voluntarily आपकी fee कम कर दी है. That is called waiver. Vice versa is a reverse position. ठीक है, vice versa is a reverse position or waiver is voluntarily giving up or removing the conditions. Okay, चलिए, great. So with this I close this discussion for legal maxim. Do not forget to watch our next 2 videos on legal maxims. They will be coming in the next week. Okay. Thank you very much. All the best for your CLAT preparation. Thank you.